Students, step number 4. Calculation of cash flows. ब्रैकेट में लिखो रिकरिंग कैश फ्लोस. In that write down working note number 1, calculation of profit before depreciation and taxation in real terms / current purchasing power terms. चलो उस पे लिखिए सेल्स. देखो क्वेश्चन में हमको जैसे दे रखा है लेट्स से द सेलिंग प्राइस पर यूनिट इज 500 और नंबर ऑफ यूनिट्स दे रखा है 10,000. प्राइस विल इंक्रीज एट द रेट ऑफ इन्फ्लेशन और वेरिएबल ऑपरेटिंग कॉस्ट दे रखा है 40%. फिक्स्ड कॉस्ट दे रखा है 22 lakhs and that is also going to rise at the inflation. तो सेल्स में हम लोग लिखेंगे 500 into 10,000 number of units. That comes to an amount of 50 lakhs. Less variable cost. $50 lakhs into 0.4. That comes to 20 lakhs. Less cash fixed cost 22 lakhs. तो सेल्स में से क्या किया जाएगा, ये सारे एक्सपेंसेस डिडक्ट किए जाएंगे और हमारे पास आ जाएगा प्रॉफिट बिफोर डिप्रीशिएशन एंड टैक्सेशन. 50 minus 20 minus 22. That comes to 8 lakhs. This is the profit before depreciation and taxation in the real term. उसके बाद calculation of cash flow. First year and second year. Profit before depreciation and taxation. First year का होगा 8 lakhs into 1.08. Why? Because say the inflation rate is provided to us as 8%. So it is 8 lakhs into 1.08. That comes to 8,64,000 first year का and 8 lakhs into 1.08 raised to 2. यानी वो सेकेंड ईयर का हो जाएगा 933,120. उसमें से हमको डिडक्ट करना है डिप्रीशिएशन. हमने डिप्रीशिएशन यहाँ पे कैलकुलेट करके रखा है. डिप्रीशिएशन है 7,50,000. फर्स्ट ईयर का 750, second year का 750. So we have the profit before taxes. Second year का है 183,120
और फर्स्ट ईयर में होगा 8,64,000 माइनस 7,50,000, 1,14,000. इनकम टैक्स रेट हमको दे रखा है 25%, इसलिए 75% हो जाएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस. So 1,14,000 into 0.75, it is 85,500. One 183,120 into again 0.75, 137,340. Then we add depreciation. Why? Because it is a non-cash item. To make the calculation of CFAT, 85,500 plus 7,50,000. So 835,500. That is of year 1. And for second year it is 137,340 plus 7,50,000. 887,340. This is the cash flow that we have for the first year and second year. उसके बाद स्टेप नंबर 5, calculation of NPV. In that, say what we will do, we already have calculated the cash flows. It is year 0, end of year 1, end of year 2. Year 0, the amount of the investment to be made is 45 lakhs. This is the cash flow. End of year 1, it is 835,500. 835,500. Second year, it is 887,340. Plus, there is a terminal cash flow. Terminal cash flow is 37,50,000. So here 887,340 plus 37,50,000. So it is 4637,340. These cash flows are discounted. और हमने ऊपर discounting factor भी calculate करके रखा है. Discounting factor is 11.39. So using the discounting factors will make the calculation of NPV. Year 0 factor is 1. First year factor is 1 divided by 1.1139. It is 0.8977.
Subsequent year it is 0.8059. So these cash flows will be discounted in present value term to find NPV. First year present value is 750,028.35. Second year it is 37 lakh 37,232.31. The amount of the investment will remain same, 45 lakhs, because it is not subject to any discounting. So 750,028.35 plus 37,232.31 minus 45 lakhs. The NPV is 12,739.34. That is the way the NPV of the project is calculated. तो हम लोग देख सकते हैं कि प्रोजेक्ट का एनपीवी नेगेटिव है, इसलिए हम लोग एडवाइस करेंगे कंपनी को कि आपको चाइना में जाके बिजनेस नहीं करना चाहिए. Over here the decision is required to be taken from an Indian company point of view, that whether to undertake a project in China or not. And of course the answer is no. Why? Because NPV of the project is negative. So final answer, write down decision. Do not accept the project. That is the way we can write the decision. Now reading for the question. Determine whether Opus Technologies should go for the project or not, assuming that neither there is any restriction on the transfer of the funds from China to India, nor charges of taxes payable on the transfer of the funds. Calculate the revised NPV. If Opus Technology can transfer the funds at the end of the project, यानी कि second year के end में, and internal cash accruals cannot be reinvested. यानी फ्रेंड्स हमको second part of the question में, that is ये जो B part of the question है, ऐसा हम लोग रखते हैं B1 and B2. In that say we are required to make the calculation of the NPV, considering that there is no restriction of the funds. यानी हमको क्या करना है फ्रेंड्स, B1 और B2 में we are required to make the calculation of the NPV in rupees term. और उसके लिए फ्रेंड्स हमको यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन दे रखा है with respect to the interest rate, उसका हमको इस्तेमाल करना पड़ेगा. We understand that the interest rate is provided to us. India में 12% और China में 10%. So using this, that is the rate of interest and the spot exchange rate,
we are required to make the calculation of the answer with respect to the forward exchange rate using IRPT. और फिर हमको वो जो फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट है उसका इस्तेमाल करना पड़ेगा फॉर कन्वर्जन ऑफ द फॉरेन करेंसी कैश फ्लो इनटू होम करेंसी, और उसके बाद हमको एनपीवी का कैलकुलेशन करना है. So I request all of you to write down answer along with me. Answer of question number B1. If there is no restriction on transfer of funds, comma, NPV can be found as under in that write down working note number 1, calculation of forward exchange rate as per IRPT at the end of year 1 and year 2. चलो राइट एन आंसर. फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट, उसमें क्या किया जाएगा, स्पॉट एक्सचेंज रेट है 9.50 इनटू इट इज रुपीस पर चाइनीज युआन गिवन. इंडिया का रेट ऑफ इंटरेस्ट हमको दे रखा है, से दैट विल बी द न्यूमरेटर 12%, और चाइना का दे रखा है 10%, और उसको हम लोग डिवीजन में लिखेंगे. So 9.5 into 1.12 divided by 1.10. 9.5 into 1.12 raised to 2 divided by 1.10 raised to 2. ऐसा करके हमको फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट फाइंड करना पड़ेगा. So 9.5 into 1.12 divided by 1.1, that is 9.6727. तो 9.67 लिख देते हैं. उसके बाद 1.12 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1.1 का स्क्वायर इंटू 9.50, दैट कम्स टू 9.8485. तो 9.85 कर देते हैं. So this is the first working note for the purpose of exchange rate. Working note number 2, calculation of amount of Chinese yuan transferred in rupees. जैसे फ्रेंड्स डिवीजन करके आएगा या मल्टीप्लिकेशन, उसके लिए एक छोटा सा वर्किंग नोट बनाते हैं, वैसा हम लोग बना रहे हैं. चाइनीज युआन एंड रुपी, एक्सचेंज रेट है 9.5 चाइनीज युआन पर रुपी. सो 9 रुपीज पर चाइनीज युआन. ईयर 0 का हमारा इन्वेस्टमेंट हमको दे रखा है 45 लाख. तो रुपी करेंसी में हमारा इन्वेस्टमेंट क्या होगा वो हम लोग कैलकुलेट कर रहा है. $45 लाख इंटू 9.5. तो क्या किया जाएगा, 45 लाख इंटू 9.5, दैट कम्स टू 427.5 लाख. सो इतने रुपीस का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा,
That is what we understand is the working note number 2. उसके बाद calculation of NPV of the project. So it is year 0, end of year 1, end of year 2. Cash flows Chinese Yuan term में already है हमारे पास. So that is required to be converted into rupees term. इसलिए यहाँ पे मैं दूसरा कॉलम बना रहा हूँ exchange rate. It is rupees per Chinese Yuan. उसके बाद हम लोग वापस लिखेंगे कैश फ्लोस इन रुपीस टर्म. फिर उसको हम लोग डिस्काउंट करेंगे एट द रेट ऑफ 12% और प्रेजेंट वैल्यू करके उसका एनपीवी. फ्रेंड्स यहाँ पे रुपी करेंसी का और कोई भी डिस्काउंटिंग फैक्टर का इंफॉर्मेशन नहीं है, इसलिए हम लोग 12% से उसको डिस्काउंट कर रहे हैं. रुपी करेंसी का कोई भी डिस्काउंटिंग फैक्टर का इंफॉर्मेशन नहीं है, इसलिए उसको हम लोग 12% पे डिस्काउंट कर रहे हैं फॉर द पर्पस ऑफ एनपीवी कैलकुलेशन. Write an answer along with me. Year 0, there is a cash outflow of 45 lakhs. So this is 45 lakhs. End of year 1, it is 8,35,500. It is 8,35,500. End of year 2, it is 46,37,340. So these are the cash flows. Exchange rate year 0 का है 9.5. End of year 1 9.67. End of year 2 का है 9.85. ये कैश फ्लोस को हमें डोमेस्टिक करेंसी में कन्वर्ट करना है. So we understand that it is 45 lakhs into 9.5. That comes to 427.5 lakhs. नेक्स्ट ईयर में जो भी कैश इनफ्लो उसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे 835,500 into 9.67. That comes to 80,79,275. I'm sorry, 285. उसके बाद 46,37,340 into 9.85. That comes to 4,56,77,799. इसको डिस्काउंट करेंगे एट द रेट ऑफ 12%. ईयर 0 का फैक्टर है 1. 1 divided by 1.12. So it is 0.8929. 0.7972. उसके बाद प्रेजेंट वैल्यू का कैलकुलेशन. जो भी कैश फ्लो से उसको डिस्काउंटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करके विल कंप्यूट द प्रेजेंट वैल्यू. इट इज 4,27,50,000. 8079,285 into 0.8929. That comes to 72,13,993.58. 4,56,77,799 into 0.7972. That comes to 3,64,14,341.36. This is the present value of the cash inflow.
और फिर एनपीवी, उसमें 7213,993.58 प्लस 364,14,341.36, ये टोटल कैश इनफ्लो हो गया, माइनस इन्वेस्टमेंट इज 427.50 lakhs 50,000, that comes to 8,78,334.94, that is NPV. Friends, over here basically what happens that हमको डिस्काउंटिंग फैक्टर का इंफॉर्मेशन न होने की वजह से हमने ये कैश फ्लोस को इंडियन करेंसी का जो एक ही हमको डिस्काउंटिंग रेट दे रखा है ना, उसके रेट से हमने डिस्काउंट किया है, and that is the way the NPV is calculated. I am going as per the ICI suggested answer, in which they have made the working like this. And we understand that, say, in this case, so the project is becoming acceptable. Why? Because the NPV becomes positive. I don't know, one line answer. Since information is not given about Indian currency cost of capital, comma, so we take rate of interest as discounting factor. Full stop. Now let us read the second part of the question. Calculate the revised NPV. यानी वापस हमको NPV करना है. If OT can transfer the funds directly at the end of the second year. ऊपर से क्या दे रखा हमको? Internal cash accruals cannot be reinvested. Correct answer B2. Calculation of NPV. उसमें लिखो internal cash accruals cannot be reinvested. Full stop. तो फ्रेंड्स कैसे होगा? ईयर 0 और सेकेंड ईयर का एंड, सिर्फ दो ही वर्किंग होगा. कैश फ्लोस, ईयर 0 का आउटफ्लो होगा 45 lakhs. That is in the Chinese Yuan term. सेकेंड ईयर का कैश फ्लो में इन दोनों को हम लोग ऐड कर देंगे, क्योंकि 835,500 हम लोग फर्स्ट ईयर में ला नहीं सकते हैं, उसको वहां पे री इन्वेस्ट भी नहीं कर सकते हैं, ऐसा दे रखा है. सो दोनों का जो समेशन होगा वही हम लोग लेके आएंगे. दैट इज 54,72,840. फिर उसको हमको एक्सचेंज रेट के साथ मल्टीप्लाई करना है.
ईयर 0 का एक्सचेंज रेट है 9.5 और सेकेंड ईयर का है 9.85। उसके बाद उसको हमको रुपी करेंसी टर्म में कन्वर्ट करना है। So it is 45 lakhs into 9.5. That comes to 4 crore 27 lakh 50,000. उसके बाद 52 lakh 72,840 into 9.85. That comes to 5 crore 19 lakh 37,474. These are the cash inflows that we have for end of year 1 and end of year 2. Now उसको अभी हम लोग डिस्काउंट करेंगे in present value term. Discounting factor is 12%. Year 0 का factor है 1. 1 divided by 1.12. First year, second year. It is 0.7972. उसके बाद आएगा present value. 4 crore 27 lakh 50,000 is year 0 cash outflow. And this amount is 5 crore 19 lakhs 37,474 into 0.7972. That comes to 4 crore 14 lakh 4,554.27. जो भी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द कैश इनफ्लो है उसमें से हमको इन्वेस्टमेंट को डिडक्ट करना है, माइनस 4 crore 27 lakh 50,000, and that is the way NPV will be found. And NPV is 1345,445.73. It is negative. Please take down answer. I'm sorry, friends, it is a small error. It is 835,500 plus 4637340. It is 5472. Into 9.85. That comes to 5 crore 39 lakhs 7,474 into 0.7972. It is 4 crore 29 lakhs 75,038.27 minus 427. It is 2,25,038.27. तो यहाँ पे भी फ्रेंड्स हम लोग देख सकते हैं कि एनपीवी वापस पॉजिटिव आ रहा है. In both the cases, NPV is positive.
So we understand that say whether there is a restriction or not, the company is advised to take up the project. ऐसा करके हमको यहाँ पे आंसर लिखने का है. Sorry for my calculation error. Written answer. NPV is positive. So accept the project. Full stop. मैं पूरा क्वेश्चन का रिवीजन करवा देता हूं. सबसे पहले फ्रेंड्स हमने कैलकुलेट किया व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ इक्विटी. उसके लिए हमने कॉस्ट ऑफ जीडीआर का कैलकुलेशन किया है. कॉस्ट ऑफ जीडीआर का कैलकुलेशन कैसे किया? D1 डिवाइडेड बाय P0 माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट प्लस ग्रोथ रेट. सो D1 इज 10 into 0.25 यानी 2 रुपये 50 पैसे into 1.10, तो वो D1 में कन्वर्ट हो गया. into 5 इक्विटी शेयर्स, क्योंकि 1 GDR इज इक्वल टू 5 इक्विटी शेयर्स दे रखा है. डिवाइडेड बाय 990, क्योंकि वैसे 5 इक्विटी शेयर्स का वैल्यू होता है 1000, पर इश्यू करेंगे तो 10 रुपए का खर्चा होगा. दैट इज अ फ्लोटेशन कॉस्ट ऑफ 1% प्लस ग्रोथ रेट 0.10, that gives 11.39 cost of equity. उसके बाद तो बहुत आसान है. सबसे पहले इन्वेस्टमेंट ईयर 0 में लैंड 30 लाख, बिल्डिंग 15 लाख, यानी कि 45 लाख चाइनीज युआन का इन्वेस्टमेंट करेंगे हम लोग. दिस इज ऑन द चाइनीज युआन. डिप्रीशिएशन कॉस्ट ऑफ द बिल्डिंग, उसको नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड करेंगे, तो अगेन हमारा चाइनीज युआन में डिप्रीशिएशन आ गया. टर्मिनल कैश फ्लो, उसमें सबसे पहले कैपिटल गेन या लॉस कैलकुलेट किया हमने ऑन सेल ऑफ द असेट. लैंड में हमको इंडेक्सेशन का इंफॉर्मेशन नहीं है, इसलिए सेल वैल्यू और परचेस वैल्यू का कंपैरिजन करके कैपिटल गेन हुआ. बिल्डिंग में सेल वैल्यू एंड WDV 0, उसका कंपैरिजन करके बिल्डिंग का हमारा कैपिटल गेन आया. वर्किंग कैपिटल का रिकवरी नहीं है. टर्मिनल कैश फ्लो, सेल वैल्यू ऑफ द लैंड का इनफ्लो, सेल वैल्यू ऑफ बिल्डिंग का इनफ्लो, कैपिटल गेन टैक्स पेमेंट का आउटफ्लो. ऐसा करके हमारे पास टर्मिनल कैश फ्लो आएगा सेकेंड ईयर के एंड का. उसके बाद हम लोग रिकरिंग कैश फ्लो का कैलकुलेशन कर रहे हैं. एज फार एज द रिकरिंग कैश फ्लो इज कंसर्न, उसमें वापस हमने क्या किया, ग्रुपिंग किया है कि जो कैश फ्लोस में इन्फ्लेशन का रेट कांस्टेंट लगेगा उसका हमने अलग से ग्रुप बना दिया. That is profit before depreciation and taxation in real terms. सेल्स लिया, वेरिएबल कॉस्ट लिया, कैश फिक्स कॉस्ट लिया, तो ये प्रॉफिट बिफोर डिप्रीशिएशन एंड टैक्सेशन आ गया. उसको हमने इन्फ्लेट किया फर्स्ट ईयर में 8% से, वापस सेकेंड ईयर में अगेन 8% से. डिप्रीशिएशन एज इज सब्ट्रैक्ट किया, प्रॉफिट आ गया, माइनस टैक्सेस, प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस, डिप्रीशिएशन का एड बैक करके कैश फ्लो आफ्टर टैक्सेस ले लिया. एनपीवी का कैलकुलेशन, जिसमें ये कैश फ्लोस को जो कि चाइनीज युआन टर्म में है उसको हमने 11.39% से डिस्काउंट करके एनपीवी निकाला. चाइनीज युआन टर्म में एनपीवी नेगेटिव आता है, इसलिए हमने ऐसा लिखा कि इस सिचुएशन में प्रोजेक्ट में एक्सेप्ट दैट इज इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए. यहाँ पे हमको टर्मिनल कैश फ्लो ऐड करना पड़ेगा, दैट इज इंपॉर्टेंट. फिर B1 में ऐसा दे रखा है कि आपको रुपी करेंसी में, डोमेस्टिक करेंसी में एनपीवी फाइंड करना है. इफ देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन, ऐसा दे रखा है, देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन द ट्रांसफर ऑफ द फंड्स,
सबसे पहले फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट का कैलकुलेशन यूजिंग इंटरेस्ट रेट पैरिटी थ्योरम. सो वी हैव कैलकुलेटेड द फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट फर्स्ट ईयर का है 9.67 और सेकेंड ईयर का है 9.85. उसके बाद एक छोटा सा वर्किंग नोट जो मैं हमेशा प्रिपेयर करवाता हूँ कि फॉरेन करेंसी के कैश फ्लोस को डोमेस्टिक करेंसी में कन्वर्ट करवाने के लिए हमें मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा या डिवीजन. एक्सचेंज रेट है 9.5 चाइनीज रुपीस पर चाइनीज युआन. तो 45 लाख का इन्वेस्टमेंट को रुपी करेंसी में कन्वर्ट करने के लिए हमें इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा. दैट कम्स टू 427.5 लाख. उसके बाद एनपीवी का कैलकुलेशन, दैट इज वेरी सिंपल डियर स्टूडेंट्स. सबसे पहले हमने क्या किया, जो भी फॉरेन करेंसी के कैश फ्लोस है उसको हमें डोमेस्टिक करेंसी में कन्वर्ट किए. एंड फॉर दैट से द एक्सचेंज रेट 9.5, 9.67 एंड 9.85 का इस्तेमाल किया. इंपॉर्टेंटली देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन, यानी उसी साल हमारा कैश फ्लोस हमारे करेंसी में कन्वर्ट हो जाएगा. तो ये हमारा खुद का करेंसी का कैश फ्लोस आ गया. इंपॉर्टेंटली यहाँ पे हमको रूपी करेंसी का कोई भी डिस्काउंटिंग रेट का इंफॉर्मेशन नहीं है. एंड गोइंग विद द इंस्टीट्यूट सजेस्टेड आंसर, जिसमें उन्होंने 12% का रेट लिया है. सो वी आल्सो यूज 12% रेट एंड बेस्ड ऑन दैट सो द एनपीवी इज कैलकुलेटेड. दिस अमाउंट ऑफ द एनपीवी टर्न्स आउट टू बी पॉजिटिव, इसलिए हमने बोला कि प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए. उसका मैंने नोट भी लिखवा दिया है. यहाँ का डिसीजन एक लिख देते हैं. एक्सेप्ट द प्रोजेक्ट. उसके बाद कैलकुलेशन ऑफ एनपीवी वंस अगेन, इफ इंटरनल कैश अक्रूवल्स कैन नॉट बी रीइन्वेस्टेड, ऐसा दे रखा है हमको. तो उस केस में क्या होगा, जो भी हमारा फॉरेन करेंसी का कैश फ्लोस है उसका हम लोग कैलकुलेशन करेंगे जीरो इन सेकेंड ईयर एंड. देखो गौर से सुनो, सेकेंड ईयर एंड का जो कैश फ्लो होगा ना फ्रेंड्स, उसमें क्या किया जाएगा, डायरेक्टली इन दोनों को ऐड किया जाएगा. क्योंकि लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन में क्या दे रखा है, इंटरनल कैश अक्रूवल्स को री इन्वेस्ट नहीं किया जा सकता है. फिर सेकेंड ईयर का ईयर जीरो का रेट, सेकेंड ईयर का रेट इंडियन करेंसी में कन्वर्ट किया, उसको डिस्काउंट करके एनपीवी का कैलकुलेशन किया. एनपीवी वापस पॉजिटिव है, इसलिए हमने ऐसा लिखा कि प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करना चाहिए.